फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग स्क्विला 30 या 200 has been found useful in cough। खांसी के लिए स्क्विला 30 या 200 डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के खांसी और छींक बारी बारी से वाटरिंग ऑफ द आइज, आँख से पानी गिरना, जैसे कि यूफ्रेसिया क्यू 30 या 200 देने से, और स्क्विला 30 या 200 और एलियम सिपा 30 या 200 देने से बारी बारी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। देयर में आल्सो बी प्लूरिटिक स्टिचेस इन द चेस्ट विथ और विदाउट डिफ्यूज़न। प्लूरिसी के अटैक में सीने में दर्द के साथ सूजन फेफड़े में हो जाता है। द कफ इज जनरली लूज एंड rattling with expectoration of such mucus। खांसी गले में घरघराहट, सीने में घरघराहट के साथ होती रहती है। In morning is more fatiguing than the dry one in the evening। सुबह के टाइम ज़्यादा खांसी आती है शाम की तुलना में। वर्बेस्कम थापसस खांसी, कफ, deep hollow hoarse with sound like a trumpet। वर्बेस्कम थापसस में खांसी बहुत तेज ड्रम की आवाज़ की तरह से, ट्रम्पेट की आवाज़ की तरह से भाव भाव करके आती है। आई हैव क्योर्ड मैनी केसेस and always used in low। I have never used the remedy for anything else। Seneca Q या 30 cough with great accumulation of mucus। Seneca Q या 30 में सीने में बहुत ज़्यादा म्यूकस की घरघराहट सुनाई पड़ती है। विच सीम्स टू फिल द चेस्ट, मालूम होता पूरे सीने में कफ भरा हुआ है। विथ मच रैटलिंग, बहुत ज़्यादा घरघराहट की आवाज़ आती है। विजिंग एंड डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग स्पेशली वैल्यूएबल विथ ओल्ड पीपल। बूढ़े लोगों के सीने में घरघराहट, विजिंग और सांस लेने में तकलीफ में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। But works well with others। Have also cured many cases of this kind and always use it low। No success with the high। 30 या 3x या Q में बहुत अच्छा दवा फ़ायदा करती है। Illustrations। Several years ago I was called to an old asthmatic who was having a terrible paroxysm। मुझे एक दमा के रोगी को ठीक करने में बहुत फ़ायदा हुआ। टेरेबल paroxysm, बहुत ज़्यादा अटैक आता रहा सांस फूलने का और खांसी का। आफ्टर सेवरल डेज ऑफ इंटेंस सफरिंग विच ऑर्डिनरी remedy did not relieve in the least, I gave him Seneca Q या 30, 3 or 4 drops of tincture in 1/2 glass। आधे गिलास पानी में मदर टिंचर
देने से once in 2 hours, हर 2 घंटे पे देने से जब तक आराम नहीं हुआ बहुत अच्छा काम किया। With promise to call again in the evening. Imagine my surprise. और शाम को मुझे बुलाने पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई पड़ा। When I called, as he ushered me in with a smile and bow, for he was perfectly free from hard breathing and cough. और वो झुक के नमस्कार किया कि उसका सांस की तकलीफ़ और खांसी में बहुत ज़्यादा आराम हो गया। एंड remained so for a long time after. और इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ड्यूरिंग सितंबर 1900, सन 1900 में आई वॉज कॉल्ड अगेन टू ए लेडी 50 years ऑफ एज। 50 साल की बूढ़ी औरत ने मुझे बुलाया। सफरिंग द सेम वे, इसी तरह की तकलीफ़ में, सांस में और घरघराहट में, खांसी के साथ तकलीफ़ में, फॉर ओवर ए मंथ एट टाइम्स वेरी सीवियरली, बट दिस पैरालिसिस वाज वर्स्ट ऑफ ऑल। इस तरह के सांस के रोग में सबसे ख़राब खांसी के तकलीफ़ में, घरघराहट में मुझे बुलाया गया। द डिस्निया वाज वेरी ग्रेट, सांस बहुत तेज फूल रही थी। हैड टू सिट प्रॉप्ड अप इन बेड, बार बार उठ के बैठना पड़ता था। चेस्ट रैटलिंग एंड व्हीजिंग, filled with mucus which she could not raise, face and hands purple from unoxygenated blood। चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ मालूम होता था कि उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, मालूम होता है उसके खून में ऑक्सीजन नहीं। इपिकाक 30 या 200 और आर्सेनिक अल्वा 200, टेंटिमटार 200, वेयर ऑफ नो बेनिफिट। इपिकाक 30, आर्सेनिक अल्वा 200, टेंटिमटार 200 देने से कोई लाभ नहीं हुआ तो सिनेगा 30 या क्यू देने से। One evening after their failure, I dropped 7 drops of tincture of Seneca Q into 1/2 glass water। आधे गिलास पानी में बॉयल्ड गुनगुना सिनेगा क्यू देने से उसको once an hour until, हर घंटे पे जब तक उसको फ़ायदा नहीं हुआ दवा देते गए और पूरी तरह से। Then at longer intervals the next AM, सुबह के टाइम, as soon as she saw me exclaimed, "Oh doctor, I wish you could just realize how I slept." और डॉक्टर साहब, मुझे रात में नींद बहुत अच्छी आई। In 1/2 hour after the first dose, I went right to sleep। पहले ही खुराक दवा लेने से मुझे नींद आ गई आधे घंटे के अंदर। एंड आई हैव हैड ए ब्यूटीफुल नाइट, और रात बहुत अच्छी तरह से बीता नींद में। एंड आई हैव हैड ए ब्यूटीफुल नाइट। आई गिव these 2 cases to impress the value of this remedy upon the reader।
I have used it many years in obstinate cough. बहुत सीवियर खांसी में मैंने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। विथ डिस्निया, सांस लेने की तकलीफ और डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टरेशन ऑफ म्यूकस, कफ निकलने में बहुत दिक्कत होती रही। एंड विच सीम्ड टू फिल द ब्रोंकियल ट्यूब, ऐसा लगता था पूरे ब्रोंकियल ट्यूब में म्यूकस भरा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। माइटस कम्युनिस, ऑब्स्टिनेट कफ। माइटस कम्युनिस, माइटस कम्युनिस 30 या 200, ऑब्स्टिनेट कफ, बहुत सीवियर खांसी के लिए, मोस्टली ड्राई विथ पेन इन अपर पोर्शन ऑफ लेफ्ट चेस्ट, ज़्यादातर सूखी खांसी बाएं फेफड़े से की तरफ से ज़्यादा, और राइट थ्रू टू लेफ्ट, दाहिने से बाएं तरफ ज़्यादा आती है। शोल्डर ब्लेड, कंधे की पंखे की तरफ ज़्यादा खांसी आती है। दिस इज ए जेम एंड हैज़ I believe cured more than one case of incipient consumption for me. टीबी के रोग में भी इस तरह की खांसी में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सल्फर 200 पिक्स लिक्विडा 30 या 200, एनीसम औरम ट्रिफ्लाइनम 30 या 200 देने से, and Theridion 30 या 200 have a similar symptom, but Myrtus communis 30 में ज़्यादा लाभ होगा, unless there is decided soric taint with Pix liquidum or sulfur 200. सोरिक खांसी में पिक्स लिक्विडम और सल्फर 200 देने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। ड्रोसरा रोटेंडिफोलिया 30 या 200 हैज़ ए डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग और ट्रम्पेट टोन्ड कफ। रात में काली खांसी के तकलीफ में कुत्ते की तरह से जो भौंकता रहता है, खांसी आती है। समथिंग लाइक दैट ऑफ वर्बेस्कम 30 या 200, वर्बेस्कम 30 की तरह से ड्रोसेरा रोटंडिफोलिया 30 या 200 में भी खांसी, काली खांसी बहुत ज़्यादा आती है रात में। बट देयर इज मोर लैरिंजियल ट्रबल विथ ड्रोसेरा, गले से लैरिंग से तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर द वॉइस इज टॉकिंग हैज़ ए डीप बेस साउंड, ड्रोसेरा 200 या 30 is also one of our leading remedies in spasmodic cough, whooping cough, काली खांसी में, कुकुर खांसी में देर तक खांसी आए। With the cough there is a great constriction of the chest and abdominal muscles, so that the patient holds them with the hands. The cough is worse after midnight. रात में आधी रात के बाद खांसी बहुत ज़्यादा तेज आती, काली खांसी।